Mashi Arvindo, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର. Last class was mostly a refresher class and a fill-in class also. First part of this canto, Yoga of the Soul's Release, ku Prabhakar bhai explain korthile. Today we will resume. We have very less text left of this canto. So kichi lines ame prathame page number 41 ru padhiba, and then we will get into the descriptions. Page 41, canto 3, the Yoga of the Soul's Release. Fourth line from top. The original desire born in the void peered out. He saw the hope that never sleeps, the feet that run behind a fleeting fate, the ineffable meaning of the endless dream, hardly for a moment glimpsed viewless to mind, as if a torch held by a power of God, the radiant world of the everlasting truth glimmered like a faint star bordering the night. Above the golden overmind's shimmering reach, even were caught as through a cunning veil, the smile of love that sanctions the long game, the calm indulgence and maternal breasts of wisdom suckling the child laughter of chance, silence, the nurse of the Almighty's power, the omniscient hush, womb of the immortal word, and of the timeless, the still brooding face, and the creative eye of eternity. The inspiring goddess entered a mortal's breast, made her study of divining thought, and sanctuary of prophetic speech, and sat upon the tripod seat of mind. All was made wide above, all lit below. In darkness's core she dug out wells of light. On the undiscovered depths imposed a form, lent a vibrant cry to the unuttered vasts, and through great shoreless, voiceless, starless breaths bore earthward fragments of revealing thought, hewn from the silence of the ineffable. A voice in the heart uttered the unspoken name, a dream of seeking thought wandering through space entered the invisible and forbidden house. The treasure was found of a supernal day. In the deep subconscient glowed her jewel lamp. Lifted, it showed the reaches of the cave, where, by the miser traffickers of sense, unused, guarded beneath night's dragon paws, in folds of velvet darkness draped they sleep, whose priceless value could have saved the world. A darkness carrying morning in its breast looked for the eternal wide returning gleam, waiting the advent of a larger ray and rescue of the lost herds of the sun. In a splendid extravagance of the West of God, dropped carelessly in creation's spendthrift work, left in the chantiers of the bottomless world, and stolen by the robbers of the deep, the golden shekels of the eternal lie, hoarded from touch and view and thought's desire, logged
in blind entrails of the ignorant flood, lest men should find them and be even as gods. So these are a few lines which takes us back to Sri Aurobindo's description of the Upanishads and the Vedas. Last year Prabhakar bhai भी सेमती कहउथिले कि secret of the Vedas होछि गोटे एमती बही which is more or less a commentary to jaha kiछि Sri Aurobindo वेदर बा उपनिषद र सहायता रे सावित्री को व्याख्या करछंती तार गोटे कमेंट्री भलिया सीक्रेट ऑफ द वेदस रहिछि एवरी एलिमेंट एवरी स्टोरी दैट फॉल्स इनटू दैट आउ जो सिंबोलिज्म रहिछि सेही प्रकार कहानी मानकरे ताकू एमती तो आमे पुराण शास्त्र रे से आहुरी धीरे धीरे अपभ्रंश ही कि जाइछि एंड नाउ टुडे वी नो देम मोस्टली एज फोक टेल्स बट ए जो गाई मानकर चोरी हेबा ताकू नै कि बंदी करी कि पणी माने रखिबा तापरे से हर्ड्स ऑफ द काउज को इंद्र जाई कि रेस्क्यू करिबा शर्मांकर ताकू जाई कि खोजिबा सरस्वतींकर ता प्रति इंस्पिरेशन देबा दिस इज ऑल सो सिंबॉलिक अबाउट वन्स स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट वन्स स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जेटा को मिस्टिकली सेजेस और सेंट्स माने ऋषि मुनि जहा सब थिले से माने ताकू बहुत क्रिप्टिक वे रे ए लैंग्वेज टी को रचना करथिले आमे पेज 41 रो ए जो स्टैंजर्स गुडी को बा जो लाइंस गुडी को आज पढिले ए लाइंस गुडी करे सृष्टि मैनिफेस्ट हेबार जो रहस्य गुडी को धीरे धीरे अशोपति माध्यम रे श्री अरविंद आम सामना रे व्याख्या करछंती ये गोटे मन स्तर रे बांधिकी कोनोसी फ्रेम भितरे बुझिबा भलिया पाठ नुहे मन यार कोनोसी व्याख्या करि परिबोनी बा मन केबे भी ए जिंस गुडी को सही पर्सपेक्टिव रे सही लाइट रे देखि परिबोनी कि बुझि परिबे काहे कि ना सेठी ताकू सही सटल एलिमेंट ता लूज कर जिवो ताकू सब बेले सब किछि जोडा टैंजिबल बुझा पडुची से जिंस गुडी को सेमिति बुझिबा को चेष्टा करिवो किंतु मनर जो सूक्ष्मतार दिगटी रहिछि ता प्रति से ए जिंस गुडी को बृहत्तर गोटे उद्देश्य रे बुझिकी वे तो तार ठीक भाव रे इंटरप्रिटेशन न करि परि ए लाइंस गुडी कर ठीक पूर्वरु गोटे इमॉर्टल एलिमेंट रो टच श्री अरविंदो लिखुछंती देयर लुक्ड आउट फ्रॉम द शैडो ऑफ द अननोन the bodiless namelessness that saw God born and tries to gain from the mortal's mind and soul a deathless body and a divine name. Is chari line enough to understand ki what is the aim of evolution, birth and death? ये गोटे cyclical process जो थे से first that shadow of the unknown आउ किछि नुहे निश्चेतना अज्ञेयंकर परछाइबा तांकर छाया रूपक से निश्चेतना रही जार पुणी आउथे कोनोसी प्रकार आकार नहीं इट इज बॉडीलेस अशरीरी किंतु नेमलेसनेस दैट सॉ गॉड बॉर्न से भगवान को ए जो प्लंज तांकर थिला निश्चेतना भितर को ता भितर पुनः जन्म नेबार देखिला ए पुनः जन्म नेबार प्रक्रिया रे एंड ट्राइज टू गेन from mortal's mind and soul से जो मर्त्य रे तार विवर्तन रो प्रक्रिया टी आरंभ हुए आउ सी प्रथमे निश्चेतना रु इग्नोरेंस रु सबकॉन्शियंट आउ तापरे धीरे धीरे से जड़ जाई पहुंचुची जड़ रु प्राण रु मन रु मनीष ए जो तार ग्रोथ टी ए द्वारा से धीरे धीरे निजको आउ थरे निजर पूर्ण स्वरूप रे प्राप्त हेबार यात्रा रे जाईछि लगी अ डेथलेस बॉडी से कौन चाहूँ अ डेथलेस बॉडी एंड अ डिवाइन नेम ये हूँ रूपांतर अ डेथलेस बॉडी एक एपरी शरीर जार मर्त्यर जो प्रिंसिपल्स गुड़िक रही से बांधी रहिबो नाही मृत्युर जो आयरन लॉ टी रही सी केवल शरीर धर्म को ही अधिक रु अधिक पोषित करुछि कि everything that has come into existence will slowly start decaying
आ धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जीवो तार लैप्स हो जीवो तापरे से बट एठी से डेथलेस बॉडी एंड अ डिवाइन नेम को दिव्य नाम धरिकी सी तार यात्राटी को संपूर्ण करिवो एई जो जर्नीटा विषय रे एठी उल्लेख कले आ तापरे we go where he speaks about that in this journey what would be his stance. The immobile leaps, the great surreal wings, the visage masked by superconscient sleep, the eyes with their closed lids that see all things appeared of the architect who builds in trance. अश्वपति सृष्टिर ए महान रहस्यटी को निज सम्मुख रे देखिकी वर्णना करछंती जे किपरि भाबरे से सुपर कॉन्शियस स्लीप रे रहितबा से अति चेतना रे वास करथुवा से परमंकर अभिव्यक्ति जोथरे से एपरि चक्षु देखुचंती जो गुडिकर लीड्स गुडिक बंद अछि तथापि से सबु किछि देखि पाउछन दैट सी ऑल थिंग्स ए चक्षुद्वय कहार appeared of the architect who builds in trance. The architect who builds in trance समाधिस्थ अवस्थारे सृष्टि को तार निज रूप प्रदान करथुबा मैनिफेस्टेशन रो सर्वमूल रे थिबा सेही परमंकर रूप वर्णना एठी अशुपति करछन तापरे हमकु पुणी नहीं जाउछन्ते निश्चेतनार गर्त को जोठो ओरिजिनल डिजायर र जात होछि कोन ए ओरिजिनल डिजायर डी कैपिटल अछि द ओरिजिनल डिजायर born in the void peered out से void भी वी कैपिटल तो से शून्य विषय रे कहउछन्ती से निश्चेतना से शून्य भितरे थिबा से ओरिजिनल डिजायर देखो ए कैंटो रे तो डिजायर इज द कीवर्ड ना काइना एठी डिजायर रु आरंभ ही हेछि the world's desire compelled her mortal birth so the original desire born in the void निश्चेतना रे निश्चेतना रु जात हेथिबा से प्रथम संकल्पटी बा इच्छाटी जे ओरिजिनल डिजायर टी कोन कि this void this inconscient will turn into the superconscient. This shadow will meet the unknown once again, the God once again. रूपांतरर प्रक्रिया रे बा निजकु पुणी थरे खोजी पाइबार टू री-आइडेंटिफाई टू ट्रांसफॉर्म of what has gone deep into the dark inconscient into that super conscient is the desire. See unki marla peered out. He saw the hope that never sleeps. से इच्छा केबे भी शांत रुहेनी माने केबे भी सोई पड़ेनी जदि सी इच्छाटी सोई पड़ला ताले जगत समूहर जो मूल इच्छाटी रही तत्वगत इच्छाटी रही विवर्तनर जो प्रक्रियाटी रही सी मध्य स्थाणु हो जिवो सी मध्य अटकी जिवो सो ही सॉ द होप से आशाटी को जो आशा केबे मध्य सुए नहीं दैट होप द होप दैट नेवर स्लीप्स सो दिस डिजायर never sleeps. It's like a hope. It never sleeps. The feet that run behind a fleeting fate. Bhagya tara batare udi jauchi. It is fleeting. Se tara nijar jo track ti ta samukhare gote nirman heichi se sei track re tara chalchi. But he sees ki this desire is running behind a fleeting fate. Kita pache pache chalchi. हम समस्त भाया कौटी जदि किए केबे बुझेदेला बतईदेला कि देख बाबा तो भाग्य रे या ही लेखा ही तो सबु इच्छा गुड़िक जमती निजकू तारी चारिपटे ही ओरिएंट कर दियंती से माने समहाउ सेल्फ ओरिएंट हो जाती ना कि एटा तो मो भाग्य तो या ही लेखा ही अनेक क्षेत्र रे गोटे हीनमन्यता भी सेइथुरु ही आरंभ हुए आ गोटे उच्च मानसिकता भी मध्य सेइथुरु ही जात डिजायर इज अ वेरी की एलिमेंट आमे केउ भलिया इच्छा पोषण करूछंती
सी ही आमको जत ये फेथ रो कथा भी सेमती जत सदस्य स एव स यू आर व्हाट इज योर फेथ तेणु श्रद्धा इच्छा ये सब विल रो स्ट्रांग इंपैक्ट गोटे स्ट्रांग विल थिबा व्यक्तिर इच्छा तार श्रद्धा तार भक्ति तार जो दिगरे से माने अनुसरण करिवे व्यक्ति सकलटी सेही भली भाबरे ही निर्माण तार सकल तत्व तार सत्तार समस्त अंश सेही लाइन ऑफ ओरिएंटेशन को ही फॉलो करिवे तेणु भाग्य जो दिगटी को देखैबो से तारी पछे पछे चलछि द इनएफेबल मीनिंग या कोनोसी प्रकार रे बुझेई हबन द इनएफेबल अगे मीनिंग ऑफ द एंडलेस ड्रीम एक एपरी स्वप्न जे अंतहीन अटे ये तो डिजायर रो परम कैरेक्टर ये तो ओरिजिनल डिजायर विषय में कथा होचंदी जे सृष्टि रचना रो संरचना रो मूल रे रहिछि नहले भी डिजायर रो ये होछि प्रकृति इट विल ऑलवेज परस्यू आफ्टर अ ड्रीम व्हिच इज एंडलेस बाय नेचर तार अंत नहीं से इच्छा हार्डली फॉर अ मोमेंट ग्लिम्प्स्ड viewless to mind ए लाइन टी को देखो ए लाइन टी रे पॉजेस गुड़ा भारी इंपोर्टेंट हार्डली फॉर अ मोमेंट glimpsed viewless to mind as if a torch held by a power of God भगवान कर कोनसी शक्ति सते जेंती से तो देखुचंती ना अशुपति ही इटा हमें विजन टी को डिस्क्राइब करूचंती बा तांकरी विजन टी को हमें गोटे प्रकार रिक्रिएट करने को चेष्टा कर अश्वपति जो देखुं कि निश्चेतना भितर यही ओरिजिनल डिजायर टी उठी आसी वर्ल्ड भितर बाहरी सी सृष्टि संरचनार सब जहाँ जहाँ मैनिफेस्टेशन रे घटुची से सब देकी गति करुची धीरे धीरे सी एमती उपरकू उठी चलती तार फ्लीटिंग फेट पछरे से दौड़ी तेणु सी तार भाग्य क्रम रे धीरे 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 आगे चलती गोटे मोमेंट पे देखिले हार्डली फॉर अ मोमेंट ग्लिम्प्स्ड व्यूलेस टू माइंड मन विश्व मन कथा फेर ये पड़ी सो इट इज समथिंग व्हिच इज यूनिवर्सल बाय नेचर कॉस्मिक बाय नेचर एम कैपिटल अच्छी ये कौन व्यक्ति माने पर्टिकुलर कौन व्यक्तिर बा कौन गोटे इंडिविजुअल मन कथा ये पड़े इट्स माइंड कैपिटल एम अच्छी सो इट विश्व मन बा दैट कॉस्मिक माइंड ताकू मध्य जहाँ गोटे क्षणक पई व्यूलेस हो जिवो एपरि एक मुहूर्त रे लागिला गोटे फ्लैश भलिया as if a torch held by a power of God भगवान जदि जने अंधकार रो बाट देकी जाउथबो बा एमती जोठी अल्प आलोक थिबो सेठी हठात किना जने गोटे टॉर्च लाइट मार दबो तो गोटे फ्लैश टे चमकिला और ताको सब किछि स्पष्ट दिसिला तो से भली गोटे जिंस हठात किना अशोकपति सामने रे घटी गला as if a torch held by a power of God the radiant world of the everlasting truth glimmered like a faint star bordering the night above the golden overmind's shimmering reach गोटे एंड्रे गोटे गोल्डन ओवरमाइंड रो शिमरिंग माने धीरे धीरे तार आलोक जमती दबदब हुए जमती जना पड़ेनी टिके टिके एमती अल्प आलोक अंधकार अंधार आलोक एमती रो खेल भितर गोटे शिमरिंग रिज रे तांको सही above that golden overmind he saw there's a glimmering faint star which has bordered the night माने कोन सेपट को आलोक अछि रात्रि रो अंधकार रो अज्ञानतार अविद्यार शेष परिधि को से जाई की पहुंची चंदी which is bordered by night and beyond that कोन अछि the radiant world of the everlasting truth so what beautiful else could be a description to this than the Isha Upanishad जे कुहे हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितं मुखं तत्त्वं पुषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये द लॉ ऑफ द ट्रुथ इज सीन और श्री अरविंदंकर यदि ट्रांसलेशन एग्जैक्टली देखिबा द फेस ऑफ ट्रुथ इज कवर्ड विथ अ ब्रिलियंट गोल्डन लीड सत्यर मुख को अपिहितम कराइछि घोड़े की रखाइछि with that brilliant golden lead that do thou remove the moment that is removed o fosterer for the law of the truth for sight सत्यर नियम को बा सत्यर धर्म को here law is धर्म सत्य धर्माय दृष्टये सत्यर धर्म को यदि
देखिबार अछि ताहले हे पुषन ताकू ए गोल्डन लीड टी को काढी देबा को पड़े दैट ब्रिलियंट गोल्डन लीड हैज टू गो ऑफ देन ओनली यू कैन बी एबल टू सी द फेस ऑफ द ट्रुथ सत्यर मुख को दर्शन करिवार अछि तो अश्वपति कौन देखुछंती कि हठात जंती से ओवर माइंड रो गोल्डन शिमरिंग रिज टी पार करी गले ही सीज कि नाइट जंती बॉर्डर्ड हे जाईची गोटे फेंट स्टार आगे रे ठीक आपण भावंतु कि जंती हठात किना आलोक पड़िबा सकासे से गोल्डन लीड टी उठी जाईची आ तळे सब अंधकार रहिची आ ऊपर गोटे विराट आलोकित जगत दिसुची द रेडिएंट वर्ल्ड ऑफ द एवरलास्टिंग ट्रुथ एठी सत्य मध्य एवरलास्टिंग से दिवसटी मध्य एवरलास्टिंग परमंकर सत्ताटी मध्य एवरलास्टिंग so this word everlasting here is the introduction of truth world before अश्वपति सत्यम ऋतम बृहत्र जगति सुपर माइंड रो वर्ल्ड भितर को अश्वपति प्रवेश अश्वपति ओवर माइंड जा तळे एबे भी इग्नोरेंस रही अविद्या रही माया रो प्रभाव रही विद्या अविद्या दुई माया रही तो आमे टिके आगु पढुथिले केमती विद्या माया मध्य आसिकी अनेक प्रकार प्रहेलिका अनेक प्रकार मिराजेस सृष्टि करथुला अश्वपति आगे कारण सी तो शक्तिशाली माया ना भगवान दैवी यशा गुणमयी मम माया दुरत्यय मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मेतां करन्ति मायारु जदि तारण हेबार अछि कहार केवल तांकरी कृपा द्वारा ही पॉसिबल केवल तांकर कृपा द्वारा तेणु अश्वपति प्रवेश रुचित्र जगत भितर को ट्रुथ कॉन्शियसनेस रो जगत भितर को ट्रुथ वर्ल्ड ना एटा धीरे धीरे आमे केमती कहउचंदी हायर माइंड रे यू गेट ट्रुथ थॉट इल्यूमिनेट माइंड रे यू गेट ट्रुथ विजन इंट्यूटिव माइंड रे इट इज ट्रुथ साइट माने ट्रुथ नॉलेज एंड देन ओवर माइंड आछे एंड सुपर माइंड इज देयर द वर्ल्ड ऑफ ट्रुथ कॉन्शियसनेस सत्य चेतना रो जगत अति मानस रो जगत सुपर माइंड अति मानस तापरे कहले even where caught has through a cunning veil the smile of love that sanctions the long game even where caught आउ कोन धरा पड़ले आउ मध्य देखिले माने धरा पड़ले इट इज caught is देखिले even where caught by his sight as through a cunning veil सते जेमति भारी चातुरता सहित से ताकू घोड़े की लुचेई की रखिथिले थ्रू अ कनिंग वेल कोन द स्माइल ऑफ लव दैट सैंक्शंस द लॉन्ग गेम तो किते बड़ रहस्य खोल देले कि जने भाबिबो ना कि भगवान काहे कि हमको ए अविद्या विद्या रो खेल रे बा माया रे पकेई की रखिचंती तो सेठी से भगवान कर से स्मित हास्य दर्शन करूचंती जे कि ए एते लंबा खेलटी को सैंक्शन करूचंती ही इज द सैंक्शनर ऑफ दिस लॉन्ग गेम ए जो माया जड़ित जगत जहाँ भी खेल चली whatever the play goes on it is all because of him ଆଉ ତା ପଛରେ ତାଙ୍କର ଅପାର ପ୍ରେମ ଆଉ କରୁଣା ଭରି ରହିଛି the smile of love that sanctions the long game the calm indulgence and maternal breasts of wisdom से देखिले भारी calmly काहकु देखुचंती सी दैट ऑलमाइटी इज पावर परमंकर दर्शन सत्य चेतनार जगत रे सत्य ऋतम बृहत्र जगत रे से परमंकर सही प्रकाशमय अभिव्यक्ति को देखुचंती जे गोटे भारी से जोटे कामनेस अछि जोठी नॉलेज थाए सेठी काम थाए जोठी इग्नोरेंस थाए सेठी ही नॉइज थाए अविद्या रे जेते अविद्यार जेते चाप पड़िबो मनुष्यर वाचनिक क्रिया सेते बढ़ी बढ़ी छ जानी तेणु सी इट इज अ इनकैपेसिटी व्हिच मेक्स हिम दिस इम्पेशेंट गोटे लाइफ डिवाइन रो चैप्टर अछि ना डेथ इनकैपेसिटी दैट आपण जानथां जेते लोअर पावर रो इन्वोकेशन हमें करिथांती राग द्वेष घृणा क्रोध कामना वासना ये सबु कैटेगरी को इन्वोक करबा पछरे देयर इज एन इनकैपेसिटी व्हिच प्लेस गोटे इनकैपेसिटी मु अन्य ऊपर रागुची एइथि पई मु अन्य को
अन्य उपरे मोर कोनोसी प्रकार क्रोध जात होउची कोनोसी प्रकार ईर्ष्या जात होउची एथि पई कारण देयर इज सर्टेन एलिमेंट ऑफ इनकैपेसिटी व्हिच इज लिंक्ड टू माय सेल्फ more incapacity to tackle that situation is creating an element of anger fear and all this jete sabu lower forces manankar play achi to eta ku reverse kemti hobo that my incapacity ba moro ta upare konosi kartritwa nahi let me not get possessed by that game which is played after me I should think about this smile of love एकरी एक प्रेम चिंता वा प्रेम तांकर प्रेम करुणा तांकर काम इंडल्जेंस जे प्रच्छदरे रहिछि ये मते प्रोटेक्शन दबो ये मते सिक्योरिटी दबो मोर सेई क्रोधाग्नि रो केवल मु ही जळिबि आ किछि नै इट विल ओनली सैटिस्फाई माय ईगो केवल मोर ईगो को ही से नरिश करिवो the smile of love that sanctions the long game the calm indulgence what a calm indulgence rich indulgence mane kon you get into it sampurna bhavare to bhitere posi jiba indulged so sei ipari eko indulgence jaha shant bhavare ghotuchi the calm indulgence and maternal breasts of wisdom eko मातृतुल्य ज्ञानर सी जमती गोटे चाइल्ड को नरिश करछि गोटे चाइल्ड एठी किए से चाइल्ड चांस सो से पे कहले एंड मैटरनल ब्रेस्ट्स ऑफ विजडम सते जमती ज्ञानर स्तनपान करौछि चांस तार चाइल्ड लाफ्टर सक्लिंग द चाइल्ड लाफ्टर ऑफ चांस ज्ञान चिंता कले विजडम रो ब्रेस्ट्स रु किए फीड होउची चांस ये उटे किपरि विजन चिंता कले आ विषय टिके हमको तो लगे कि जिंस गुडी को अति इग्नोरेंस रे घटिले बाय चांस बोली हमें कहू ना बाय मिस्टेकली घटियला एरर रे घटियला बट एठी किए चांस को फीड करूची हु इज सकलिंग द चाइल्ड लाफ्टर ऑफ चांस द चाइल्ड लाफ्टर ऑफ चांस is being nourished is being nurtured by wisdom the child laughter of suckling the child laughter of chance and silence the nurse of the almighty's power से सर्व शक्तिमान कर शक्ति को किए पोषण करुछि किए नर्स करुछि किए तार रक्षण वेक्षण करुछि साइलेंस तेणु तांको जगत रे सब कैरेक्टर्स को हमकु गोटे माँ ता छुआ को स्तनपान करैवार दृश्य सहित तुलना करिकि श्री अरविंद बुझुछन बिकॉज़ दैट इज अ वेरी इंटेंस मोमेंट से इंटेंस मोमेंट रे हमकु स्माइल ऑफ लव काम इंडल्जेंस चाइल्ड लाफ्टर ऑफ चांस सकल्ड बाय विजडम एंड नर्स ऑफ द ऑलमाइटीज पावर इज साइलेंस एई कथाटी को कहउछथि शांत भाव रे सेई नीरवता सेई निस्तब्ध नीरवता भगवान कर शक्ति को पोषित करुछि नर्स ऑफ द ऑलमाइटीज पावर द ओमनिशिएंट हश एपरि एक सर्वव्यापी सर्वज्ञात नीरवता हश इज बूम ऑफ द इमॉर्टल वर्ड से आदि नादर से मूल शब्दर ये होची जठर वूम मदर्स वूम जेमती so the immortal word has come out of this womb it is mar picture lines रे देखो and this is a picture which depicts that of a mother तेणु ये किए ये सही सृष्टि कारिणी शक्ति भगवान कर से परमंकर सृष्टि कारिणी जे निजर प्रेम द्वारा निजर से नीरवता द्वारा से निजे भगवान को एठी परिप्रकाश करोछि मैनिफेस्ट करोछि द ओमनिशिएंट हश बूम ऑफ द इमॉर्टल वर्ड से चिंता कले एपरि नीरवता जाटू की जगत जात हिछि ये एमिति कोनोसी गर्भ नुहे जा भितरु की गोटे संतान गोटे जीवन जात बेटू जगत जात हिछि
द ओमनिशिएंट हश या भितरु ही से इमॉर्टल वर्ड बाहरी and of the timeless the still brooding face ए एंड होची सेठी ऊपर लागी ची इवन वे आर कॉट ताकू छाड़ीबेनी लंबा लंबा लाइन उड़ा ना सो वी विल हैव टू कीप ट्रैक ऑफ दैट कौन कौन धरा पड़ले इवन वे आर कॉट द स्माइल ऑफ लव द calm indulgence maternal breast of wisdom suckling the child laughter of chance silence the omniscient hush and and jota this is for what came out of that omniscient hush the omniscient hush ti kona womb of the immortal word and womb of what the timeless and of the timeless the still brooding face epari ek mukhamandala jaha ki samayar paridhi bahari कौन सी काल भितर नाही काल द्वारा सीमित नुह एक एपरी मुखमंडल जार क्रिएटिव आई दुईटी हेउची इटर्निटी सो नाउ यू हैव टाइमलेस सो इटर्निटी टाइम रो फैक्टर इट टाइम हैज अ फैक्टर व्हिच सेज अबाउट इंफिनिटी एंड देयर इज शाश्वतता इटर्निटी त्या माने कोन ये कहार मुखमंडल सेही परमंकर मुखमंडल सेही परमंक मुखमंडल जो थिरु की टाइमलेसनेस रो भाव जातो कालातीत टाइमलेस कालातीत कालरू अतीत टाइमलेस शाश्वतता गोटे निरंतरता गोटे क्रिएटिव आई ऑफ इटर्निटी कारण ए शाश्वतता भीतर ही जगत सृष्टि होईची एंड द क्रिएटिव आई ऑफ इटर्निटी तेणु से जो सृष्टिकारिणी शक्तिर जो वर्णना तांकर सेठिकार जेतबेले अश्वपति सृष्टिर रहस्यर मूल रे जेतबेले एपरी एक दृश्य वर्णना करछंती तो सेतबेले तांकू से इंस्पायरिंग गॉडेस सरस्वती कथा मन पड़ुछि द इंस्पायरिंग गॉडेस एंटर्ड अ मॉर्टल्स ब्रेस्ट मेड हर स्टडी of divining thought and sanctuary of prophetic speech and sat upon the tripod seat of mind all was made wide above all lit below जेतबेले सरस्वती प्रवेश घटुची इंस्पिरेशन रो देवी आसिकी आगमन करछंती सी आसिकी कहा भितर प्रवेश कले इनटू द मॉर्टल्स ब्रेस्ट एटी मॉर्टल कथा पड़ला माइंड स्मॉल आसिला माने एटी अश्वपति भितर जमती इंस्पायरिंग गॉडेस कर प्रवेश है सी ए सबु सत्य को ए जगतर समस्त रहस्य को लेकी ता भीतर को प्रवेश कले ए डिवाइनिंग थॉट रो स्टडी रूम कर देले तक मेड देयर कोठी इनसाइड दैट मॉर्टल्स ब्रेस्ट एंटर्ड अ मॉर्टल्स ब्रेस्ट मेड देयर हर स्टडी ऑफ डिवाइनिंग थॉट एपरी चिंता जहां प्रत्येक टी जिंसो को तार दिव्यता प्रदान करे सेपरी चिंता सब अश्वपति भीतर को आसवा लगिला एंड सैंक्चुरी माने गोटे प्रोटेक्टिव प्लेस बर्ड सैंक्चुरी एनिमल सैंक्चुरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी सो इट इज अ सैंक्चुरी माने इट इज प्रोटेक्टेड ऑफ प्रोफेटिक स्पीच भविष्यत धर्मी जो प्रोफेटिक डिक्लेरेशंस गुडिक रही जो स्पीच टी रही जहाँ भविष्य धर्मी भविष्यतर कथा कहूथुबा भविष्यतर सबु चिंता को प्रकाश करुथुबा सेपरी सत्य गुडिक पई सेठी गोटे सैंक्चुरी भलिया सी निर्माण कले आ सेठी कहा ऊपर बसिले एंड सैट अपॉन द ट्राइपॉड सीट ऑफ माइंड ट्राइपॉड सीट ऑफ माइंड मनर तीनटा अंश आम जानते गोटे जे शरीर सहित अच्छी गोटे जे मन सहित प्राण सहित अच्छी आ गोटे जोटा प्रॉपर माइंड जे कि विकास करुच्ची निजर इंटेलेक्चुअल डायनामिक और थिंकिंग माइंड द्वारा सब ऊपर थिंकिंग माइंड इंटेलेक्चुअल माइंड गोज विथ द लॉजिक डायनामिक माइंड प्रोवाइड्स इट अ डायनामिज्म एंड देन थिंकिंग माइंड इज द प्योर माइंड माइंड प्रॉपर जोटा को आम कहते तेणु आउ गोटे माइंड अंश जोटा फिजिकल माइंड फिजिकल सहित अच्छी वाइटल माइंड जोटा प्राण सहित रही तेणु मनर जो तीनोटी अंश रही
पार्ट्स ऑफ प्लेन्स ऑफ द बीइंग प्लेन्स एंड पार्ट्स ऑफ द बीइंग रो से पार्ट को आउथरा आलोचना करनी आमे मनर जो ट्राइपॉड सीट टा कोन बुझी पड़छ ऑल वाज मेड वाइड अबव तो जेतले मन निजर पूर्ण क्षमता रे जिंस गुडी को देखुची इंस्पिरेशन बा अनुप्रेरणा रो परिप्रकाश रे सेते बेले ता सामने रे सब किछि विस्तारित जहा किछि ऊर्ध्व को से देखुची ऑल वाज मेड वाइड अबव एंड ऑल लिट बिलो तथा तळे सब किछि आलोकित हो जाइछि ऊपर सब किछि विस्तारित तळे सब किछि आलोकित आउ तद मध्य रे इन डार्कनेस कोर शी डग आउट वेल्स ऑफ लाइट एबे आरंभ हला वेद वर्णित से कहानी रो गुटे अंश इन डार्कनेस कोर अंधकार रो गर्भ भितरे अंधकार रो सेई शून्यता भितरे सिए गुटे आलोक रो कुओ खोली दी गला कोर शी इन डार्कनेस कोर शी माने अनुप्रेरणा डग आउट वेल्स ऑफ लाइट अंधकार भितरु आलोकर कूप गुड़िक खनन है ऑन द अनडिस्कवर्ड डेप्थ्स इम्पोज्ड ए फॉर्म परी गभीरता जहा केबे कोठी उजागर है नथिला अनडिस्कवर्ड थिला सेपरी गर्त मानकरे सी एक रूप सकल को आविष्कार कला इम्पोज्ड ए फॉर्म लेंट अ वाइब्रेंट क्राई टू द अनअटर्ड वास्ट्स अनअटर्ड माने केबे से कथाटी उच्चारण है नथिला अनुचारित अनुचारित सेई परिव्याप्त वातावरण रे से एक वाइब्रेंट क्राई रो नाद कर एंड थ्रू ग्रेट shoreless voiceless starless breaths pour earthward fragments of revealing thought hewn from the silence of the ineffable अंधकार मझरे आलोकर कूप खोलिबा डेप्थ भितरे जहा अनडिस्कवर्ड थिला सेठी फॉर्म आनिबा जहा अनअटर्ड थिला सेठी गोटे वाइब्रेंट क्राय देबा तथा जहा सीमाहीन जहा शब्दहीन जहा कौनसी प्रकार आलोक बा वस्तु सकल विहीन सेपरी एक जगत भितरे से पृथ्वीगत सत्य गुड़िक को धीरे धीरे रिवील करने को लगिला तार से थॉट्स माध्यम रिवीलिंग थॉट देला बोर इन दैट स्टारलेस ब्रेड्स ही बोर अर्थवर्ड फ्रैगमेंट्स ऑफ रिवीलिंग थॉट जहा केबे उजागर हे नथिला अनवेल्ड हे किथिला एबे से गुडी को सब प्रकाश घटुची तार सब रिवीलिंग थॉट्स गुडी को जहा भितरे भी अनुप्रेरणा कार्य करूची एटी अश्वपतिंक क्षेत्र रे अनुप्रेरणा रो चाप द्वारा अनुप्रेरणा रो बा इंस्पिरेशन रो जो घटुची एटी तार एक्सप्रेशंस गुडी को द्वारा से अर्थवर्ड फ्रेगमेंट्स मानकरे रिवीलिंग थॉट्स को धीरे धीरे उजागर करने को लगी एपरी रिवीलिंग थॉट्स गुड़िक सब हैव कम आउट ऑफ ह्यून और आर क्रिएटेड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द इनएफेबल से अज्ञेयंकर अव्यक्ति इनएफेबल माने अज्ञेय तंकर वी डोंट नो वी कैन नॉट एक्सप्रेस हिम ही इज इनएक्सप्रेसिबल नॉलेज द्वारा जाको प्राप्त करी होबो नाही सेपरी परमंकर कथा को तांकर से निस्तब्धता निरवतार जगत रुआणी से एई अर्थवर्ड फ्रैगमेंट्स रे रिवीलिंग थॉट द्वारा प्रकाश करछन्ति अ वॉइस इन द हार्ट uttered the unspoken name a voice in the heart a voice again V capital so it is of the Lord a voice in the heart uttered the unspoken name जो नाम केबे उच्चारित हे नथिला तांकर से that voice has uttered that name that unspoken name ये कोनोसी प्रकारर मर्त्यगत व्यापार नुहे आदौ संभव ही नहीं बाह्य जगत रे ये सबुर कोनोसी प्रकार संभावना नहीं काटी दियंतु बाहर जहा किछि घटिबो केवल नाटक माया रचित ये अंतर्जगत व्यापार ते सूक्ष्म से कथाटी जो नामटी केबे परिप्रकाश ही नथिला केबे कुहा जाय नथिला दैट अनस्पोकन नेम
was uttered in the voice, it was uttered in the heart. A voice in the heart uttered the unspoken name. A dream of seeking thought, एपरी एक स्वप्न जे कि से चिंता प्रति जिज्ञासु हेछि, seeking thought, wandering through space. पूरा जगत सृष्टिगत जेते स्पेस रो जेते व्याप्तता रहिछि ता भितरे से जेमति ताको खोजी बुलुछि सेही थॉट टिकु. Entered the invisible and forbidden house. वे inner रो आहुरी inmost आडकु गले. Entered the invisible and forbidden house. Invisible दृश्यमान नथिबा अदृश्यमय से गृहटी भितरकू से बास भितरकू जहाकू परित्यक्त कराई जाइछि, फॉरबिडन के जाउ नांती ता भितरकू. आ जेमिति से ता भितरकू जाइछंती, द ट्रेजर वाज फाउंड ऑफ अ सुपरनल डे. ता भितरे से रत्न को देखुचंती सेही सुपरनल डे रो, से एवरलास्टिंग डे रो, से उच्चतर ज्ञान रो परिव्याप्तता भितरे जहाँ असीम अटे ता भितरे से रत्न को से उद्धार करुचंती. एतिकी कहि देई कि पुणी आउथरे कहानी रो सीक्वेंस भितर को हमकु श्री अरविंद नै जाउचंती, जहाँ कि सेही पणी मानकर चोरी आ वेदरे वर्णित सेही गाई मानकर दैट काउज एंड ऋषि स्टोरी. एटी सीक्रेट ऑफ द वेदर्स तो पढ़िबा निहाती दरकार, कारण दैट स्टोरी हैज बीन सो. अंगिरस ऋषि मानकर सेही कहानी, इंद्रंकर इंट्रोडक्शन, हाउ माइंड केम एंड हाउ माइंड वाज अगेन नरिश्ड. तो ये कथाटी सेठी रहिछि. आज आई वाज ड्यू टू दिस रेन समहाउ ट्रैप्ड इन द ऑफिस, तेणु विथ द लिटरेचर अवेलेबल विथ मी, I think I'll take a pause today here. It's a short class, I can understand, but then I'll have to travel back home. तेणु आजिर क्लास टी को एठी रखिबा. आमे आपण मानकर किछि भी प्रश्न थिबो, किछि आ शेयर करिवार थिबो, ए कहानी टी को आमे प्रथमे आगे पढ़िबा सीक्रेट ऑफ द वेदर्स रु अंगिरस ऋषि मानकर से कहानी, एंड देन वी विल गेट इनटू इन द डीप सबकॉन्शियस ग्लोड अ ज्वेल लैम्प. बट ये गोटे यात्रा, ये गोटे जर्नी. अशोपति जेमती भितर को जाउछंती सेमती ही ऊपर को जाइछंती. तेणु जेते ऊपर से सुपर कॉन्शियस रो वर्ल्ड देखुछंती, पुणी इट्स अ रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ही इज लुकिंग इनटू व्हाट इज देयर इन द इनमोस्ट ऑफ हिज बीइंग. तेणु आसंतु आपण मनकर कहार कोन कहिबार अछि. Just take a minute and then we can start sharing our thoughts. Thank you so much.